Hello everyone, let's continue our chapter 15, light. We have already discussed about light, its characteristics, reflection of light, plane mirror. Now we will discuss, in this module we will discuss about spherical mirrors, यानी जो curved shape के mirrors होते हैं, their types and their uses. Then we will discuss about lenses, then their types again, their uses and the dispersion of light. Okay, let's start with spherical mirrors. आप सबने राउंड यानी स्फेयर मीन्स व्हाट, इट इज अ कर्व्ड शेप. ओके, यानी कि एक लाइक हम एक बॉल ले लेते हैं. इफ विल कट द बॉल इनटू टू पीसेस, यू विल सी अ हॉलो पोर्शन इन इट. ठीक है, एंड द वन पोर्शन विच इज इन द दिस फॉर्म. आई विल कट इट लाइक दिस. आई हैव कट इट फ्रॉम हियर. तो दिस इनर पोर्शन, द इनर पोर्शन ऑफ द बॉल दैट एक्ट्स एज अ concave mirror because its outer portion is polished. Okay, I have the concave mirror here. Here outer portion is polished. इसका outer portion polished है and this acts as a concave mirror. Is it okay? Now, and this portion, its inner portion is polished. I have the convex mirror here also. It is bounded inside. अगर आप ध्यान से देखो तो ये अंदर को है and it's ये बाहर का portion that acts as a reflective portion. Clear? This acts as a reflective portion. Clear? So that means that is basically what this is the convex mirror and concave mirror. Now if we'll talk about spoon, अगर आप कभी ध्यान से अपने घर में spoon को चेक करें तो its inner portion that always gives you an inverted image, हमेशा inverted image आपको देगा. What is that? Basically that is a concave mirror that acts as a concave mirror, but the outer portion, this acts as a, क्योंकि ये बाहर को है and it is polished portion, that will give you erect image. That is basically a convex mirror. Is it okay? Concave mirror always shows the converging light, whereas convex mirror always shows the diverging rays. Is it okay? Now if we'll look about इमेज फॉर्म्ड बाय कंकेव मिरर. अगर कंकेव मिरर से, मैंने अभी आपको बताया कि आपको उल्टी इमेज दिखाई देगी, तो इट ऑलवेज फॉर्म यू इन्वर्टेड इमेज. लाइक इमेज फॉर्म्ड बाय कंकेव मिरर, इट मे बी स्मॉलर, इट मे बी लाइक दिस. दिस इज अ कंकेव मिरर, it may be smaller if I according to the size, distance. It may be smaller, it may be larger, it may be inverted, it may be erect. कैसी भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, देन इट मे बी ऑल्सो बी रियल, इट मे बी वर्चुअल, इट मे बी इन्वर्टेड, इट मे बी इरेक्ट. नाउ इफ विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ कंकेव मिरर यूज्ड इन टॉर्चेस. टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, आगे के ये जो पोर्शंस बने होते हैं, हेयर द कंकेव मिरर इज यूज्ड. ओके, इफ इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट्स, जो आगे की सर्च लाइट्स होती हैं जिससे हम ढूंढने निकलते हैं, ठीक है, तो सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स के बाहर जो हेडलाइट्स होती हैं, क्यों उसमें यूज होते हैं? बिकॉज इट स्कैटर द लाइट लाइक दिस, डाइवर्ज करती हैं ये, ठीक है, इट स्कैटर द लाइक दिस एंड टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट. नाउ दे आर यूज्ड इन द शेविंग मिरर्स. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो आपके ब्यूटी पार्लर्स पे लगे होते हैं या बार्बर्स के पास लगे होते हैं, दे आर यूज एज शेविंग मिरर्स, ताकि शेव करते समय ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर to see larger image of the face. Now it is used by dentist हैं आपके जो, या आईज वाले हैं, वो इसको यूज करते हैं बिकॉज अगर कुछ छोटा सा भी कुछ है तो वो आसानी से दे सके, टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ. देन इट इज यूज्ड इन फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में बड़े बड़े सोलर फर्नेसेस में बड़े कनकेव मिरर्स यूज होते हैं, सो दैट दे कैन रिफ्लेक्ट द sun's heat, सन की हीट को ले सके, एंड they will work as at least about 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हॉट गर्म कर सके उसको. तो दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन द टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेसेस. नाउ इफ विल टॉक अबाउट कन्वेक्स मिरर्स, दे ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज. ओके, हमेशा छोटी इमेज दिखाई देती है उनमें. First of all, I tell you that means this is outer portion, this is the reflective portion. ये अंदर को गया हुआ portion and this is the painted portion. So this reflective portion always like this. This is the object. You are seeing this object is smaller in size. Always it is smaller in size and direct.
और सीधा आएगा आपके पास. It is smaller in size and erect. That means the image is smaller in size than object and it is always erect. That it cannot be obtained or virtual, it cannot be obtained on screen. Now if they talk about the uses of convex mirror, so it is basically used as a side view mirrors. जो आपके कार के व्हीकल्स के साइड पे जो मिरर्स लगे होते हैं, स्कूटर्स के साइड पे लगे होते हैं मिरर्स, किस लिए होते हैं? टू सी द वाइड लार्ज एरिया बिहाइंड द व्हीकल. जब आप स्कूटर पे जा रहे हैं, आप कार पे जा रहे हैं, तो यू कैन सी लार्ज एरिया. मतलब अगर गार्डन्स हैं, ट्रीज हैं, सब कुछ इकट्ठा बीच में आ रहा है, लाइक मैनी व्हीकल्स. अब कार एक इतनी शीशे से तो छोटी होती है ना, बट ड्यू टू दिस कन्वेक्स मिरर यू कैन सी द लार्ज वाइड एरिया. दैट मीन्स इट हेल्प्स द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड दैम. एक लार्ज वाइड एरिया का ट्रैफिक जो है, ठीक है, that they can easily see. So they can in the vehicles, so we use convex mirror as a side view mirrors. Is it okay? Now let's talk about lenses. अब हम बात करते हैं lenses के बारे में. lenses कहाँ यूज होते हैं? बेसिकली आपने देखा होगा lenses आपके spectacles में यूज होते हैं, यानी दूर की नज़र के अलग लेंसेज यूज होते हैं स्पेक्टिकल्स के, ठीक है. नज़दीक की नज़र के लिए अगर हमें चश्मे बनवाने हैं, स्पेक्स बनवानी है, तो वी यूज लेंसेज एट दैट टाइम. ओके. नाउ लेंसेज, अगेन लेंसेज आर व्हाट? लेंसेज आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड अप ऑफ ग्लास और मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अगर आपने देखा हो फाइबर के भी आते हैं अब लेंसेज, तो उन चीज़ों से बने होते हैं. एंड द लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज अगेन कनकेव लेंस and the other one is convex lens, again of two types. If we'll discuss them, the concave lens convex lens की बात करें तो it is thinner at this point. outer part पे ये बिल्कुल thin होता है, और जो inner part है इसका that is very thick like this. bulges, that means it bulges out at the inner portion. okay. and the outer portion अगर आप देखें, बिल्कुल outer portions ये बिल्कुल thin है, इसके बिल्कुल बारीक आपस में जुड़े हुए हैं. क्लियर? तो दिस इज द कनकेव कन्वेक्स लेंस विच इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस. एंड द कन्वेक्स लेंस बेंड्स लाइट इनवर्ड्स. अंदर की तरफ इसकी लाइट जो है वो बेंड होती है एंड इट विल कन्वर्ज, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. नाउ इफ विल टॉक अबाउट concave lens, this is the concave lens. okay. तो concave lens is what? it is thin. this thin portion, this is the thin portion in the middle. बीच में बिल्कुल thin होता है. अब हाथ लगा के देखेंगे thin है, but outer portion, if you are looking here, this is the outer portion and it is very thick. it is very very thick. so this outer portion is thick. okay. and it is thick at the edges. now the concave lens bends light outwards. बाहर को ऐसे बेंड करता है वो लाइट को, ठीक है. तो इट बेंड्स लाइट आउटवर्ड्स, सो इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस. Clear? Now if we'll talk about image formed by convex lens, अगर हम convex lens की image की बात करें तो it is formed by convex lens may be larger than the object. अगर if we'll take this lens, convex lens, तो इसकी image जो form होगी it may be larger than the object. I am seeing image, it may be larger than the object. ठीक है. it may be real, that means, or it may be virtual. ओके. देन इट मे बी इन्वर्टेड और इरेक्ट. या तो ये इन्वर्टेड होगी और इट मे बी इरेक्ट, किसी भी फॉर्म में आ सकती है कन्वेक्स लेंस की. और अगर हम कन्वेक्स लेंस की अगर हम एक प्रॉपर्टी देखें तो वी कैन डू प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स लेंस. यू कैन से लाइक प्रॉपर्टी नहीं, अगर हम एक प्रैक्टिकल करना चाहें तो आई एम यूजिंग दिस कन्वेक्स लेंस. आई विल गो इन सनलाइट, आई विल टेक अ पेपर एंड कंसंट्रेट ऑन द सनलाइट. सन की डायरेक्ट रेज इसके ऊपर आनी चाहिए, आपके इसके ऊपर. हेयर आई हैव अ पेपर, ठीक है. एंड द डायरेक्ट रेज हेयर, व्हेन द डायरेक्ट रेज फॉल्स ऑन द कन्वेक्स लेंस, योर पेपर विल गेट बर्न. अ होल, एक छोटा सा होल हो जाएगा जो जल जाएगा वो, ठीक है. दैट विल गेट बर्न बिकॉज उसकी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन उसके ऊपर हुई है. तो दैट मीन्स कन्वर्जिंग हुई वहां पर. क्लियर? देन वी हैव images formed by concave lens. concave lens is again a convex, it is the image formed by concave lens is virtual or can be obtained on the screen. the image may be smaller in size or than the object. ठीक है. now we will call about uses of lenses. now what are the uses of lenses? first of all, convex lens, it is used in each and every camera
एक्सेप्ट पिन होल कैमरा. अगर आपने 6th स्टैंडर्ड में पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ा है तो वी मेक पिन होल कैमरा. Here we can able to make a image like this and a rectilinear, it based on the rectilinear propagation of light. But this convex lens they based on the reflection of light. इसका principle reflection of light है. Okay, so it works on the all types of camera. Then it is used in telescopes. It is used in microscopes. It is used as a magnifying glass. Clear? Also now the lens also used, the convex lens used by in the spectacles. अगर हम देखें तो हमारे स्पेक्टिकल्स में यानी स्पेक्स में यूज होता है टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यानी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बुक पढ़ने में और जो छोटे न्यूज़पेपर रीड करने में. ठीक है, बेसिकली दिस स्पेक्टिकल्स आर मेड टू सी टू रीड द बुक्स बाय और यू कैन से रीड द न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बाय ओल्ड पर्सन्स बेसिकली. तो दैट मीन्स उनको पढ़ने में जब दिक्कत आती है तो दैट कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड. नाउ the concave lens is maximum used in making again spectacles but to see distant object. अब जैसे मैंने लगाए हुए हैं तो these are the concave lens. ठीक है, these are the concave lenses to see distant object clearly. Is it okay? Yes, our next topic is dispersion of light. Dispersion is what? Basically the splitting of white light into 7 colors. आपने रेनबो वगैरह देखे बनते हुए. So why? What is that? When there is a lot of rain, after that water vapors are left in the clouds. वो clouds के अंदर जो water vapors होते हैं, they will the sunlight, when sunlight falls on them, they will split it into 7 colors. So that is called as, basically called as dispersion of light. Next is our spectrum. When light is passing through a prism, we have a object. In the lab we use an object that is called as prism. It is a 3D, it is in a 3D shape. Okay, then in the next topic we will discuss what is prism. It is splits into band of 7 colors. When we will keep it in a sunlight, we will see it will split into 7 colors. में split हो जाता है. So that is called as, that band of 7 colors is called as spectrum. Now that band is called as, basically which is made up of 7 white light. The colors which we will get from white light are Vibgyor, called as Vibgyor. That means violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, now we will discuss about dispersion of light in detail. Now what will happen when a rainbow is usually, how it is formed? It is seen in the sky. How it is seen? After a rain, when sun is at very low portion in the sky and the rainbow has 7 colors. वो 7 colors कैसे split up होते हैं? I have told you when you will see when the water vapors left in the sky, okay, or in the deformed clouds, वहाँ पे जब sun की rays पड़ती हैं तो that will be changed into a rainbow. Now if we will talk about prism. Prism, that means the spectrum that will form this type of spectrum. That means when white light fall on this prism. This is the prism which is in the 3D shape. Okay, this is the prism. ये 3D shape में when white light falls on it, like I have put it in a sunlight. मैंने उसको पेपर पे sunlight पे रखा. When white light falls on it, जैसे इस पे होगी तो it will split 7 lights. You will see 7 lights from here. अभी भी शायद आपको दिख रही हो because it is in light. Okay, तो अगर it will show 7 lights. आपकी जो स्कैटर होगा ये किस में स्कैटर होगा? इट विल इन अ 7 लाइट बट इन अ ऑर्डर. दीज 7 कलर्स आर इन ऑर्डर ऑलवेज. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज विबग्योर. Is it okay? And so if we'll take some more examples of this dispersion of light, that is we can take like you have seen water on the side of the roads. रोड की साइड पे आपने पानी देखा होगा बिखरा हुआ. What is that? You have seen you have seen colors in them also. उसमें आपको colors भी दिखाई दे रहे होंगे. Why will you will how it will possible? कि उसमें colors आपको क्यों दिखाई देते हैं? Because the leakage from the oil leakage from the vehicles. आपके vehicles से थोड़ा थोड़ा oil जो leak हो जाता है वो उस water के साथ mix हो जाता है and that will splits into 7 color. उसके अंदर आपको फिर वो 7 color and that is due to the dispersion of light. Okay, now we will talk about CD.
आपके पास सबके पास कॉम्पैक्ट डिस्क है कि नहीं है? दिस टाइप ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें इन कॉम्पैक्ट डिस्क shows what they are showing. They are showing 7 colors. Okay, they are showing 7 colors. This is what? This is the example of dispersion of light. Then we will take the example of soap bubbles. Soap bubbles आप पानी में सरफ को लगाते हैं करते हैं तो you have seen bubbles, और आप प्ले भी करते हैं bubbles के साथ. When you blow the bubbles, what will happen? There are also, you have seen the different types of colors in them. These are these 7 colors you have seen in that. Yes, we have already studied that white light that will convert into 7 colors or dispersed into 7 colors. Now what we have to do, we have to tell that these 7 colors, or you can say rainbow colors, that will also disperse into or produces, when they mix together, they will form white light or they will produce white light. इसका एक एग्जाम्पल है, और यू कैन से दिस एक्टिविटी दिस यू कैन डू एट होम. बहुत आराम से कर सकते हो. यू कैन टेक अ डिस्क, ओके, लाइक दिस, एंड कवर इट विद अ पेपर. आप इसके ऊपर एक पेपर लगा दीजिए, व्हाइट पेपर, एंड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड लगा दीजिए. ओके, व्हाट यू विल डू, डिवाइड दिस डिस्क इन इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स में आप इसको 7 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लीजिए, लाइक दिस, एंड कलर देम. Like you know that all the colors विब्योर के कलर्स आपको मालूम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको कलर अच्छे से कलर कर लीजिए ऑन बोथ द साइड. ओके, नाउ कीप दिस डिस्क इन इट. आप उसको क्या कर सकते हैं, नाउ कीप इट इन हेयर इन द पेंसिल और इन अ पेन और विद अ मोटर. यू कैन अटैच सम स्मॉल मोटर हेयर विद अ बटन. यू कैन डू इट. ओके, इफ विल मूव दिस डिस्क, अगर मैं इस डिस्क को यहाँ पे अच्छे से अटैच कर दूँ, इस तरह से अटैच करूँ कि इट कैन मूव लाइक दिस. ये ऐसे ऐसे अगर बहुत फास्टली मूव होता है तो दैट मीन्स व्हाट डज दिस शो, दिस शोज दैट द व्हेन इट मूव्स वेरी फास्टली इट विल look like this. That means white color will be here. You will see like this that the white color here is there. That means this 7 colors changes into white color. This disc is called as Newton's colors disc. इसको हम न्यूटन की कलर डिस्क कह सकते हैं. You can make it with the help of a motor, or you can attach the motor, okay, or you can make it like this only. आप उसको पेंसिल के साथ अटैच कर लीजिए. सम रबर बैंड विल बी हेयर सो दैट एक फिक्स हो जाइए और आराम से मूव कर सके. तो दैट मीन्स व्हेन इट मूव्स वेरी फास्टली, ठीक है, when the disc is rotated fast, the colors gets mixed and appears white in color. Always it appears white in color. This is called as, or you can say this disc is called as Newton's disc. This is all about this chapter. Thank you, students.